Hello, guys. Welcome to United Bedtime Talk. Tonight, Pehla, I want to start with the Hello. news. एक मिनट मेरे को you guys can hear. हाँ. Yes, yes. So Sorry. news ये है कि आज पैनल में से there was another guest जो injured हो गए हैं. Apparently fell down from the stairs and he has got a hip issue. ऋत्विज. अरे ठीक है ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. It was on a lighter note. I hope आप ज़्यादा पेन में नहीं हो ऋत्विज. So tonight we are joined by Parito, Kshitij, Mudit and Vignesh is on the way. Usually late ही होता है. ठीक है, पता नहीं क्या करता रहता है घर पे. शायद डिनर कर रहा हो apparently. प्रत्युष आज हमारे साथ नहीं है because he is out on a date. Sorry, सबको नहीं बताना था क्या? So tonight we're gonna discuss about the press conference that had Ralf Ragnick coming out firing. I felt he said कि भाई तुम ओलिगार्क्स की बात कर रहे हो तो सिर्फ वो चेल्सी में नहीं है, आर्सेनल और एवर्टन में भी है. I think it was very interesting, very interesting. We'll come to that. We'll talk about the formations and the squad predictions for everyone here. Plus we'll see कि scoreline prediction क्या रहता है. Is top 4 theoretically possible? Theoretically तो possible है, but is it the last match where it's even theoretically possible? या फिर इसके बाद भी कुछ opportunity है? All right, let's get into it. Let's start with the news that is जो कमेंट किया है राफ रैगनिक ने when he was asked about Russia Ukraine that you cannot foresee this. Anybody sitting in the room before 4 weeks cannot foresee this. Even Everton and Arsenal have oligarch as ownership part. What do you guys think? Sanction सिर्फ चेल्सी को आएगा कि फ्यूचर में आर्सेनल और एवर्टन को भी प्रॉब्लम आ सकता है या फिर they can isolate those ownership part? Technically, they should have also got sanctions. Look, I would like to say that look, if Chelsea gets sanctions, why are the other clubs not getting that? Ownership to unki bhi hai. The only difference is that Roman owns all of Chelsea, while these guys own part of it, part of their clubs. But then oil money is oil money, right? Russian money is Russian money. तो फिर वो भेदभाव क्यों technically? And I think on a regulations. I think more of कि इन ये लोग किस बेसिस पे ये लोग I feel कि if ये जैसे उस्मान कौन है ये आर्सेनल में रशियन ओलिगार्क किसी का स्टेक है राइट तो उसमें उसका कितना परसेंट स्टेक है वो लोग कैसे सैंक्शन करेंगे वो कुछ क्लियर नहीं है. अब्रामोविच का तो बहुत बहुत सीधा फंडा था कि ही इज द सोल ओनर ऑफ चेल्सी एंड ही हैज बीन द फेस बिहाइंड व्लादिमीर पुतिन तो सैंक्शन बहुत इजीली ही वाज बीन सैंक्शन बट व्हेन इट कम्स टू आर्सेनल एंड एवर्टन आई थिंक इश्यूज तो आएंगे तो दे हैव टू स्पेसिफाई द यूके गवर्नमेंट. Yeah, but I Mudit think bhai. they should. Basically, my say is that they should. Like, whatever way, just make sure that all Russians are. If you're putting them to the sword, all Russians should be on the sword. Like Chelsea is not the only club. Exactly. तो अब जैसे आई थिंक एवर्टन लास्ट वीक ही कुछ तो उनके रशियन इन्वेस्टमेंट्स या कुछ तो दे हैड टू फॉरगो या स्पॉन्सर्स थे आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर तो लास्ट वीक ही एवर्टन ने वो चीज की है तो बहुत मुश्किल है आई गेस आर्सेनल का तो मतलब इफ वन ऑफ द रशियन ओलिगार्क्स इज एक्चुअली फोर्स्ड टू सेल इट्स स्टेक तो मुश्किल तो होने ही वाला है आर्सेनल को भी. Also, I would like to point out कि ये जैसे 3 ने membership मतलब उनका sponsorship छोड़ दिया Chelsea से and Suspend किया. suspend किया and other are talking about it. So all I would like to just say on that part is उनको पहले ये नहीं पता था that they were supporting a Russian owned club owner. Like after sanctions, why are they putting all of that now? Right? So it's muddled up. Obviously, it's muddled up. I think Amar Reddy has a very good comment where he said, "ये सब लोग दिखाने के लिए ही कि देख हम कुछ कर रहे हैं." Exactly. I think that is the thing. ये सब they're just doing it for the show, and Roman is their biggest
I would say pony right now because he was in the media in terms of Chelsea and in the media in terms of Russia. हाँ, So वही वो है तो अच्छा उसको बस बना स्केपगोट दिया मिल है। गया, बलि का बकरा हाँ मिल गया हम लोग को इस समय। एग्जैक्टली एग्जैक्टली So you guys are saying that it's all about setting an example Yeah, they are to doing that. Russia. They are setting an example right now. They are not doing it for the actual crimes or the alleged crimes or the support of the alleged support of a leader. They're doing it because they need a scapegoat, and the media is on a frenzy because all of Europe has already put sanctions on Russians, and UK is the last country to do it. So they are like, if you are doing it, let's do it big. Let's directly go after the most famous guy in the whole list, and then we'll talk. Because if you put sanctions on guys who have made real estates and who have made buildings in London, it won't be a same effect. But if you put it on the owner of Chelsea Football Club, that's a huge effect. The ripple waves, we are feeling it right now, right? We are seeing people crying about it. We are seeing people happy about it. Personally, very happy about it. But that's the thing. So there are ripples, right? I would not care अगर कोई एग्जैक्टली। किसी का 15 माले का लग्जरी बिल्डिंग सील कर दिया होता, मेरे को क्या। पर चेल्सी पे सील लगे तो मेरे को भी खुशी होने वाली थी, वैसा है ये तो। Okay. दूसरा एक जो बहुत important comment आया है that in terms of the squad, Ronaldo is fit, Cavani is fit, Rafael Varane is fit, only Luke Shaw is out. एक जो उत्तम ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इसको रिलेट करते हैं इससे, व्हाट इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड लूज टुमारो, ही इज ट्राइंग टू से अगर हार जाती है तो नॉट लूज तो खेलते ही हम हर मैच में, ठीक है। So if we lose tomorrow, what are the repercussions? Udit bhai, रिपरकशंस बोलो मुदित भाई, आप बोलो। नो रिपरकशंस। why? जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, सीन है अभी यूनाइटेड का। 3 दिन बाद मैच है अपना UCL, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे वाला सीन है। Simply every single day after every loss or draw, we'll have positive news on the manager till the season ends. That's the approach this club is going to, take in, because they know that every fan is looking forward to who's going to be the next manager, and they're going to use it whenever things turn negative. So loss होगा, win होगा, कोई repercussion नहीं है। sorry Udit bhai, to cut you off, we have Vignesh in the house finally. 2 दिन से छुपाए बैठा था चेहरा अपना, ठीक है, जब से PSG हारी है 2 दिन से बंदा आया नहीं है स्ट्रीम पे, फाइनली द गाय इज हियर, ठीक है। मुरिशियो, फ्रिगेचिनो, बॉटलचिनो, जो भी बोलो, नहीं बट विघ्नेश, विघ्नेश जितनी के गाली लिए देनी है तो ना, पोचेटिनो टू यूनाइटेड रूमर्स तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए ना, तो सबसे तो खुशी होगा वो। एब्सोल्युटली। तेरे को फुल फ्रीडम है, पर इसको जितनी गाली देनी है दे देना आज। अब इतना फेथ है, Yes, है yes. विघ्नेश कि वो भी ये Yeah. बॉटल भी कर देगा ये जॉब को, ठीक है। नहीं वो भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, साइन नहीं। करना आएगा, पेन टूट जाएगा, इतना बॉटलर है भाई, बता रहा नहीं हूँ भाई, नहीं, नहीं भाई, उल्टा उल्टा वो लॉस ने और इजी कर दिया, पॉजिटिव में आएगा। मैं। अच्छा, बॉटल दिखा के बोल रहा है। So let's come back to the pre-match discussion. So we are talking about press conference here, जिसमें अपने 3 players fit है, Ronaldo, Cavani and Rafael Varane now. So I think that if we lose this match or if we don't perform well, it will shatter more confidence in terms of the UCL game. I think अगर कल जीतते हैं तो एक आउटसाइड पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बनता है कि शायद रेस में रहेंगे टॉप 4 तक, कितने वीक्स तक रहेगा वो वी डोंट नो, प्रैक्टिकली आई डोंट सी इट, ठीक है। तो इन दिस सिनेरियो एटलीस्ट यूसीएल गेम के लिए वी वुड बी एबल टू टेक सम कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द गेम इफ वी प्ले वेल, इफ वी गेट अ विन, वी नीड टू गेट द जॉब डन एंड इट्स अ आई डायरेक्ट थिंक 6 पॉइंट। अनरिलेटेड है यार, आई थिंक मीट अनरिलेटेड है। इफ वी विन और वी लूज, यूसीएल वाला टाई इज कंप्लीटली डिफरेंट। अपने को तो विन डेफिनेटली बूस्ट गिव्स आवर स्क्वाड अ बूस्ट इन टर्म्स ऑफ कि भाई अभी भी टॉप 4 होप है, जो मेरे को तो है नहीं, बट फिर भी ऐसा है कि भाई टॉप 4 होगा।
But if we lose, then तो मतलब it all the more confirms कि we are almost out, क्योंकि Arsenal is already 9 ahead. They're already 9 ahead with the games in hand they have. तो भाई उस सब से देखा जाए, but I think it is completely unrelated to the Atletico game. उसमें अगर कल हारे भी, तो I won't be surprised if we smash Atletico. UCL अलग है. Smash That's why Atletico. we can we definitely can. We can only do that on paper. We don't do that on the field. We Paper? do, तो इसीलिए can की बात है ना. We actually going to do it? I don't know, but we can. 26 shots, 1 goal. Yeah. That is our. It ends with 1-1. Uh, It ends in 1-1. that is that where is we are our at the smashing. moment. That is our Yeah. smashing. Yeah, unfortunately. हाँ, we I can still beat feel Spurs, obviously. I still feel कि top 4 is more realistic than the Champions League. Same और here. जो Top four, अचीवेबल भी obviously है. it is realistic. Because Top see four, आर्सेनल, obviously. ठीक है, आर्सेनल के हाथ में गेम्स है, बट उनके गेम्स आर अगेंस्ट चेल्सी है, सिटी है, they play Spurs again as well. So you never know. हाँ, टॉप 4 ऑब्वियसली रियलिस्टिक है. वो तो कोई बोल ही नहीं रहा कि भाई आई एम नॉट टेलिंग कि भाई चैंपियंस लीग जीतना ज्यादा रियलिस्टिक है, बट आई कैन जस्ट सी कि कल का गेम वोंट हैव रेपरकशन, जो मीत एक्चुअली ओरिजिनली पूछ रहा था. I would say So But I कि want to कल का regardless, address. game. एक मिनट परितोष, एक मिनट. So Harman says Meet loves Goldbridge. Let me tell you officially here in front of everyone. I love Goldbridge as much as I love Pochettino. Very much. Very that much. बहुत so ज्यादा. much. एक चैलेंज है मीत, आज का पूरा स्ट्रीम विदाउट सेइंग द वर्ड पॉचिटिनो तेरे लिए. नहीं Then होगा. I'll just say bottle chino. If you minute do bingo, it, 5 minute the bingo rest, रखो. if you do it, rest of us will give you something. Bottle chino I and don't want potachino anything from you. banned for today. We don't want to talk about that guy right now. Just Okay, let's talk Khatam. about the fit player. Uh, sorry, Paritosh, I had cut you in between. Please go ahead. Yeah, no, I was just saying that both games are equally important, I would say. Yeah. Given, like, we just talked about the Chelsea thing, we don't know what's going to happen there. And Spurs is another competitor, right, for our spot. So I would hope that we win. And I think we should go for the win. It does not affect the Atletico match in any ways, but top four is a more highly probable target when it comes to end of season goals in terms than the Champions League. So it's that. And Yeah. I think if I remember correctly, last time we beat them with Ronaldo and Cavani scoring, right? We won 2-0 with both of them scoring. 3-0 If 3-0 I था. 3. Oh, 3-0, okay. Yeah, but I remember Ronaldo assisted Cavani's goal and he himself had a goal as well. So it's good Yeah. that those two are back finally. Uh, Hopefully we see All the one three of them gives us start. hope. Varane You back. know, Varane back is a bet. Yeah, Is a Varane as well. Yeah. वो ज्यादा Var- होप देता है कि मे नहीं, बी but हम लोग actually लेस में कंसीडर करेंगे. ये तीनों ही वरान उतने का ही सिर्फ एक इक्वली ही है इम्पोर्टेंट है. कि हाँ, सॉरी विघ्नेश, हाँ. नो आई एम सॉरी, ये बोल रहा था कि तीनों भी उतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है. जितना भी हमने रिसेंटली बहुत रोनाल्डो को कोसा है, बिकॉज ही डिडंट स्कोर दैट मच, वो 10 गेम रन, जस्ट अ सिंगल गोल. बट अगेंस्ट सिटी यू कुड सी, वी वर मिसिंग दैट स्ट्राइकर, द मूवमेंट फ्रॉम द स्ट्राइकर. So I think regardless of his form, we need him for the rest of the season. एक तो ये एक चीज़ जो पब्लिक काफ़ी बोल रही है कि रैंगनिक के सिस्टम में रोनाल्डो इज नॉट फिटिंग इन एंड ऑल दैट. आई डोंट थिंक दैट्स एंटायरली ट्रू. चांसेस मिले, Yeah. ऐसा नहीं है कि Yeah. चांसेस नहीं मिले. Look कन्वर्जन at the नहीं हुआ है. chances he's missed. That's भाई a ऑलरेडी 2 different हैट्रिक thing. मार लेना चाहिए उसने. I love Ronaldo and I think he'll get back to his best. He has to. Yeah. But the thing is, it's not Rangnick's system here. The chances our Yeah. players are missing, and also I agree that there is a lack of creation again. So we are expecting a lot more on that. अरे किसकी Yeah, गर्लफ्रेंड याद कर रही है? ये ये तेरी विघ्नेश है तू भाई. ही है, तू ही है, पता है मेरे भाई ये विघ्नेश तेरी की है. है वो. मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं है भाई. को. बॉयफ्रेंड. ये भाई अरे अब यार पर्सनल लाइफ है. I don't judge. Ronaldo has to step up against
टॉटनम भाई पूरे क्लब को स्टेप अप करना है, हाँ, पूरे notably जो Ronaldo. स्टार्ट करते हैं। अरे ये देख विघ्नेश, इफ हाँ मैसेज आया तेरा। भाई थैंक यू प्रज्ञान। Thank you so much, Pragyan. Mark Goldbridge and Meet Goldbridge both hate sports and loves hosting streams on YouTube. Bhai, I don't flip flop from my opinion. I don't flip flop from my opinion. So, by the way, guys, I didn't. So, one more thing that I wanted to touch upon is that Scott McTominay may not be fit along with Luke Shaw. Do you think it's a huge miss? Probably Matic should have started the Atletico game and McTominay today, but does it reverse the order, or you see It will. Fred starting? reverse the order for me. McTominay तो I think McTominay is more irrespective, I think crucial for the McTominay अगर Atletico tie. fit हो जाए तो वो Atletico game start करेगा। He has to rest tomorrow. I feel. I don't think हाँ, there is rest to there's a हाँ, we can point in. I get क्या it, बोलते हैं? Vignesh. You're right. Yeah. You're right. I understand, but he'll play. Yeah. वो Who तो will अभी play? डिपेंड McTominay. McTominay will play. स्कॉट पर Will he राहुल fit but tomorrow? the only Yes, thing I feel tomorrow. मेरे को ऐसा लगता है कि वो नहीं खेलेगा बिकॉज राहुल ने बोला है कि आई डोंट वांट टू रिस्क इट सो देखते हैं अभी क्या होता है वो आई डोंट थिंक हाँ. आई थिंक विल सी It's a calf injury and he said that he doesn't want to Fred. risk it. Yeah. I hope. but Killen I- says, I think he's talking about Ronaldo here, that get back to his best, can't keep waiting for that to happen. We have no agreed, choice right now. agreed. But हाँ, दूसरा striker exactly. कौन है? Exactly. Beggars can't be choosers, my friend. Right now, we are the beggars. Yeah. expect him to kind of do something in the Champions League for Yeah, sure. I'm hopefully. hoping. It has Yeah, to. If the Atletico game doesn't fire his मतलब fire him up and at least get his form back, तो मेरे को नहीं लगता कुछ और कर Yeah, पाएगा। exactly. And Champions League is his thing, right? Like he loves the grandest stage of them all, as they say. Grandest So- stage of them all, and then it is Atletico, his favorite opponent. एक मिनट अबीर भाई, अगर ऐसा हुआ ना तो हम जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना सबको कॉल पे बुलाएंगे। What if Manchester United goes on a rampage and UCL and then यार अबीर भाई ये मुदित भाई के पास ओले गुनार सोल्शायर का 1999 का जर्सी है, ठीक है, तो अगर यूसीएल जीतते हैं तो अगर मुदित भाई मूड में है तो शायद दे भी दे किसी को। मेरी दुखदायक विघ्नेश स्टोरी को है नहीं मेरे को। मिलेगा भाई। विघ्नेश के बजाय मेरे को या परितोष में से किसी को भी दे दो। मेरे को दो यार मेरे को दो प्लीज अरे तुम उससे लाइव याद आया, अरे अगर रिवाज आप अगर देख रहे हो तो हमने आपको मेल किया है आपके एड्रेस के लिए, जर्सी भेजनी है भाई, मेल तो कर दो एड्रेस अपना, हाँ भाई ताकि आप तक पहुंचा पाए। ओके, वरना ये अबीर भाई, विघ्नेश तो और देख दूसरा चीज ये है हाँ भाई कि नहीं तो मैं ले जाऊंगा रैम्पेज पे जाने की कोई जरूरत नहीं, अपने वी कैन डू द चेल्सी वे एज वेल। ऐसे थोड़ा खिसकते Shit house. वन करते भी पहुंच जाएंगे, ऐसे मतलब जाना हो तो। Shit house, proper shit house रे 2012 हाँ, वाला वही। चेल्सी यूसीएल। पर एक्चुअली में कैसा है कि आवर क्लब इज नॉट मेड टू शिट हाउस मैन। दूसरे क्लब क्या 10 मैन जाते हैं ना, ऐसा उनको खुन्नस आ जाती है कि अपने तो के किसी को जाने नहीं देंगे। अपना क्लब पागल हो जाता है कि यार करे क्या, मतलब ऐसा होता है 10 लोग से खेल भी सकते हैं, ऐसा हो जाता है अपने साथ। तो आई डोंट थिंक वी कैन शिट हाउस अ विन। द ओनली थिंग इज वी जस्ट काइंड ऑफ गेट लकी एंड रोनाल्डो लाइक रोल्स बैक द इयर्स, अ कपल ऑफ इयर्स, तो शायद कुछ हो पाए। Need him to do it. क्यों नहीं करता बे मेल चेक? आज ये रिवाज उनमें से लगता है जो सिर्फ अपना गूगल अकाउंट खोलने के लिए मेल लॉग इन कर दो, हो गया काम। लाइफ टाइम पूछो ही मत, वापस लाओ पासवर्ड। हाँ, कुछ जो बैन साइट्स है इंडिया में, उसके अकाउंट तूने ऐसे ही बनाया विघ्नेश, स्पीकिंग फॉर एक्सपीरियंस। आई डू चेक माय मेल्स रेगुलरली भाई। ऑन मेल तो सर उससे यू कैन गेट इन, उसको बोल दे ट्विटर पे या उस पे मैसेज कर दे एटलीस्ट। भाई रिवाज भाई आप इंस्टा पे मैसेज डाल दो, आपको वहां से हम कांटेक्ट करेंगे आगे। Lineup prediction for tomorrow. Let's get into it. या फाइनली Manchester United. Let's क्या तू उसमें बॉटल क्यों छाल रहा है?
क्योंकि कल भी बॉटल ही होने वाला है। हाय भाई यार। एक मिनट काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है ये विघ्नेश का कि कल कल वापस बॉटल ही होने वाला है। हम खेल रहे हैं स्पर्स के सामने, याद रखना। स्पर्स का एक्स मैनेजर इस मॉरिसियो पोचेटिनो, तो कौन सी साइड से बॉटल करने बोल रहा है वो नहीं पता है विघ्नेश, क्लैरिफाई। बाय द वे स्पर्स भाई, स्पर्स हमसे बड़े बॉटलर्स है एक्चुअली। वो दे यस, कैन बीट लीड्स, सॉरी लीड्स नहीं, अभी किसको फाइनल मारा इन्होंने रिसेंटली? लीड्स को नहीं, एवर्टन एवर्टन एवर्टन। एवर्टन। हाँ, ये एवर्टन को फाइनल मारेंगे और एस्टन विला से 1-0 हारेंगे, तो ऐसी साइड है वो, तो कुछ बोल नहीं सकते। दे अपन भी आर वॉटफोर्ड से अनप्रेडिक्टेबल। हारते हैं। मेरे को तकलीफ फिलहाल उस डेयान कुलसिप्स किससे है भैया, वो क्या खेल रहा है वो, और केन भाई गलत टाइम पे फॉर्म ही फाउंड इट, बट या केयरफुल। बताओ विघ्नेश भाई, आपका स्क्वाड बताओ, वेल, स्टार्टिंग 11। वान बिसाका को बैठना होगा, डहेया वान बिसाका को बैठना होगा, बिकॉज मैनचेस्टर डार्बी बहुत ही पथेटिक था उसका परफॉर्मेंस। फिर लिंडलोफ एंड मगवायर, बिकॉज वारान का फिटनेस का आई डोंट नो हाउ मच फिट ही इज टू प्ले, रिसेंटली कोविड से आया है। सो टेलेस को भी मैं बिठा देता अगर जो अवेलेबल होता, बिकॉज टेलेस भी इक्वली शिट था इन द डार्बी। सो बट ऑप्शन नहीं है तो टेलेस। मिडफील्ड में मार्टिच एंड फ्रेड, then Bruno, Elanga, Rashford, and Sancho. Sorry, Elanga, Ronaldo, and Sancho. Sure. Nice one. Let's go with Mudit. I'll go with De Gea, Dalo, Varane, Maguire, Telles, Scott, Pogba, Bruno, Sancho, Ronaldo. हो गए ना 11? नो एलांगा। Yeah. Kshitij. DDG, Dalo, Varane, Lindelof, Telles. Midfield probably Fred, Pogba, Bruno, and then you have front three of Sancho, Ronaldo, and एंथनी। Elanga. Option नहीं है. I ऑप्शन wouldn't नहीं, have जैसे started विंगार्ड, Elanga. मार्कस रैशफोर्ड। नहीं Rashford नहीं. At this form I actually can't see him starting, but yeah. नहीं, ऑप्शंस है बट वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे इन द करंट फॉर्म। परितोष भाई। Dahea, Dalot, Varane, Maguire, Telles, Matic, and Fred, Pogba, Sancho, Ronaldo. I think that should be more on. And Bruno. 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 Yeah. I thought you were dropping Bruno. Bruno. ना ब्रूनो को तो मैं भी ड्रॉप वही नहीं कर सोचा पाए 2 भाई। मिनट के लिए, ब्रूनो आगे की जगह माटा को खेला। ना भाई ना, ब्रूनो ना हो ना तो अपने 2 शॉट भी ना होए, ब्रूनो ना हो तो। हाँ, वो तो अरे क्या बात कर रहे हो, 2 शॉट तो फ्रेड ले लेता। ना ऑन टारगेट की बात, ऑन टारगेट क्या, वो अपने उनके हाफ में नहीं जाते। ब्रूनो था तो भी नहीं जा पाए थे सिटी के सामने, तो नहीं होगा तो सोच लो क्या होगा हमारे साथ। Let's deep dive into this. I'll share my squad. I had shared in the earlier video, but I'll go with David De Gea, Diogo Dalot, Rafael Varane, Lindelof, and Alex Telles. I don't want to see Maguire. क्यों क्यों मैं बट यू स्टार्ट विल। करूं हैरी मागवायर को? मागवायर को क्यों स्टार्ट करूं? मीत ऑनेस्टली इधर किसी को नहीं चाहिए मैगवायर, पर सबको पता है कि वो होने वाला है, इसलिए वही किसी ने स्टार्ट ड्रॉप करने किया वाला है. हाँ. एग्जैक्टली। देखते हैं पता नहीं क्लब 11 में। कैप्टन भी होता तो शायद स्टार्ट भी नहीं करता. Apart from that, I want to see Diego Dalot over Aaron Wan-Bissaka. I think Aaron Wan-Bissaka might get one more opportunity for this year to show something. That will be the game against Atletico, where he might be subbed in. Maybe I'm speaking very hypothetically here. जहां पर वो वापस 30 मिनट का कैमियो दे सकता है, जहां पर वो अच्छा खेले. Otherwise, his season is done. I think
बहुत बड़ा डेंट रहा है for him this season. The way he has fallen out of the order, the way he has performed, from being one of the best right backs in terms of his defensive ability, इस साल तो positioning में वो भी तकलीफ दिया है. He has not been good in defensively as well. Attacking issues तो है ही है उसके. So I would start Delo, but then 8 गेम से Delo start नहीं किया है. Yeah, Actually, that is one of the biggest mysteries. exactly. वो थोड़ा ऐसा लगा कि how क्यों He was doing मैं well, पहले- at least attacking में जो ball progression है, at least वो maintain कर रहा था. We used to attack from the right side as well. He was not Yeah, doing actually- bad. That was the thing. He was there. Like you could not. He was not having a performance where you could drop him. And then 8 games in a trot is a huge thing. And So it's Van surprising Bissaka to be आके- really honest. And Van Bissaka आके तो वही same mistakes. Exactly. हाँ, No idea why. no, Aaron also couldn't क्या बोलते हैं chance he couldn't take the chance जब डालो was out उसने और गंदा परफॉर्मेंस दे दिया डालो से. Yes. So let's talk about midfield. Because McTominay is injured, I originally went with McTominay. I think he'll not play tomorrow. At least he'll not start. That's why I'm going for Matic over McTominay. Otherwise, I would have started McTominay. There was a comment that लोगों को क्या दिखता है McTominay में? अमर भाई options नहीं है. Options नहीं है. He's definitely not one of the best CDMs available. But ये squad में और क्या ही options है? आप फ्रेड को नहीं खिलाओगे? भाई He's more dreadful. उसमें कुछ दिखता नहीं है बट अगर वो मिडफील्ड में नहीं होता है तो ही इज द बिगेस्ट मिस. अपना मिडफील्ड उसके अलावा घटिया है in terms of defending. I mean, And they winning all the ball back. they all add up together. Okay, Yeah. like just like fill in the blank scene. It's not like they completely fill in the gaps, but they work. मतलब चलाने वाला जो हाँ. होता है ना कि चला लेंगे वो सिस्टम में Yeah. he fits. But I love the player, man. At least he gives 100% when Passionate, yeah. Paritosh bhai, what do you think? Ideally, I think we need an upgrade. McTominay is a very good squad player. Very good squad player. I have said it here as well. I think a couple of weeks ago that McTominay is a player that you need in your 25 because those late December, early January games where you have to slug it out, you need that guy where everybody is tiring and he's running about getting into 50-50s like there's no tomorrow, and then scoring those bangers. So you need those guys, but first team, no, he's not that quality. And right now, और कोई है भी नहीं तो लाइक इट्स जैसे मुदित भाई ने बोला वैसा कि भाई गैप है फिल करना है. क्लोजेस्ट कौन है जो ये वो नहीं बोलते वो स्क्वायर पेग है राउंड होल है. क्लोजेस्ट कौन अंदर जा सकता है अंदर. अब राउंड है ही नहीं हमारे पास तो क्या डालेंगे जो और अंदर जा सकता है वो मैकटोमिने है अभी. So it works, but we need a massive upgrade. We need a massive upgrade for both exactly. Fred and McTominay, to be very honest. Saying McTominay is a even DM is wrong. Yeah, Pogba का exactly. replacement आ जाने से पहले ही हम we need a massive upgradation there. But What about the suppose two? नहीं but suppose sorry Meet, but अगर if even 10% chance अगर अभी we get Eric Ten Hag, do you see Van de Beek coming back and getting into the scheme of things? I thought said that Van de Beek would be his new signing. No midfielders because no midfielders because the new PR will be that Van de Beek is back and he's like a new signing for Eric Ten Hag. I wouldn't be surprised if Everton the Glazers even take a decision to sign Ten Hag because of that, and then tell him to convert Van de Beek into a fucking CDM. You never know. Shubham says we don't have a single player that can deliver good crosses and set pieces. I disagree with you, Shubham. We have Bruno, we have Pogba, we have Alex Telles. Even Luke Shaw is a decent crosser, and at deliveries he is still decent. So I don't agree with you. I agree on the corners part. The corner delivery can be better. Free kicks definitely we are decent. Corners can Free be kicks also definitely we can be better because the current guy only shoots it in the crowd and does not give it to anybody else.
Remove Ronaldo from free kicks, please. Exactly. ब्रूनो को So, दे दो, वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अंदर डाल ही देगा, ऐसा है। At बॉल least वाला on अच्छा है। target कुछ तो करेगा। वही। बिल्कुल। Moving on from CDM, I want to see two number 8 4-3-3 usual formation with Pogba and Bruno. इस गेम में हम पोजीशन रखेंगे, ऐसा नहीं Yeah. होगा कि सिटी जैसा हाल होगा। हाँ, ठीक है कि सिटी जैसा हाल तो नहीं हो 92% सकता। पोजीशन, 8% पोजीशन, तो इस गेम में पोजीशन होगा। दे आर गुड इन अटैकिंग ट्रांजिशंस एज वेल, टॉटनम, बट आई फील ये अपना अब तक का बेस्ट मिडफील्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, चांसेस क्रिएशन। अब बट बोल लो। एक चीज है कि कॉन्टे मोस्ट प्रोबेबली बैक थ्री जाएगा बिग गेम में। Yeah. तो बिग अगर वो बैक थ्री जाता है तो वो मिडफील्ड ओवरलोड करेगा। तो इज इट एक्चुअली गुड कि हम लोग 4-3-3 ले जा रहे हैं? वो बैक थ्री Yeah, I जाएगा think तो आई थिंक वी शुड गो विद टू स्ट्राइकर्स, वी शुड गो विद कवानी एंड रोनाल्डो। कवानी एंड अगर वो रोनाल्डो बैक थ्री बोथ, जा हाँ रहा है, हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। Yeah. ड्रॉप 4-4-2 वन खेल ऑफ द, सकते हैं। या ड्रॉप या आई थिंक देन द क्वेश्चन इज वुड यू ड्रॉप सैंचो, बिकॉज लाइक अकेला बंदा है जो खेल रहा है। बहुत बट एग्जैक्टली नहीं, बट फिर दोनों बट नहीं स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसा होगा कि रोनाल्डो सैंचो अप फ्रंट खेलेंगे, कवानी हाँ. सब इन होगा। ही वोंट हैव टू 36-year-old स्ट्राइकर्स प्लेइंग, ये फॉर श्योर है। I think we should stick to 4-3-3 because जैसे मीत भाई ने बोला we will be keeping more ball than them because Spurs like to play without the ball. So I think we should go with 4-3-3 and try to convert the वही chances and विदा create as much as we can. नहीं, बट फिर अगर वो बैक थ्री जाएंगे तो मिडफील्ड वही 4 या 5 आएंगे, तो फिर वहां नहीं ओवरलोड एक्चुअली होगा, तो वही प्रॉब्लम है। I think that is the reason why I wanted Pogba in the front three. That was my thinking as well. Ki if Conte tries to do that extra man midfield thing, Pogba is always going to drop back in that inside left channel. And I think some of his best games have been against Spurs playing in that left wing, like that 4-5 assist game. That the season before that as well, the 2 goals which he assisted. So I think Pogba works in that left channel role because their right back is very shit. Their right back, you could say it is the only team in the top 6 that has a worse right back than we do at times. So uh, they do suffer that in that position, and playing Pogba over there will actually help us. तो वो But अपना दोनों Paritosh साइड भाई, कवर हो सकता है। हाँ अभी recently Matt Doherty has been firing. हाँ अभी फॉर्म में है, बट लाइक डॉहर्टी, मैं तो हाँ। सिर्फ पास्ट की बात कर रहा हूँ कि इट इज वन ऑफ द ओनली फ्यू क्लब्स वेयर द राइट बैक और द इनसाइड लेफ्ट channel of our attack is a big issue for them. They are not able to cover it, and Pogba has been gifted a lot of opportunities because of that, and he has actually succeeded against them. So I Yeah. would like to continue that, but I mean, uh, it's a thing that Rashford फॉर्म में But है नहीं, so but you already Paritosh are a भाई, so guy less. I'm sorry Paritosh भाई, but आप बोल रहे हो कि you want him in the left wing, but what formation are you thinking to go with? No, it's a 4-3-3, but Yeah. with Pogba tucking in, that he normally does. That in Okay. that left channel, he just holds there. Sometimes Bruno Mm-hmm. comes over and he drops back. That kind of thing. Okay. Okay. बट पारितोष भाई फिर उस केस So में सैंचो with को भी 4-3-3 without 4-4-2, you say? हाँ, exactly. Yeah. बट Okay. उसमें फिर सैंचो जिस पोजीशन पे अभी ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, यू आर रिमूविंग हिम टू राइट विंग देन। No, but the thing is that is the thing with Pogba, Bruno and Sancho. वो तीनों को घूमना बहुत पसंद है और वो तीनों तीनों जगह पे खेलते हैं. Like Bruno Yeah. also goes down the right, goes down the left. So that interchange can happen very organically between all of those three. And those three are Yeah. very, very technically good players. So like if there's a 1-2 coming off, if there's a movement of the ball and things, these three can manage. I think these three are some of the best when it comes to doing that Yeah, kind of things. and I think that improves our unpredictability factor because Yeah, against Spurs you exactly. need Yeah. that surprise factor in midfield. Yeah. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं तो आई डेफिनेटली वांट टू एटलीस्ट वी स्टार्ट द गेम विद अ 4-3-3 वेयर सैंचो इज ऑन द लेफ्ट। फिर मिड गेम में यू चेंज द फॉर्मेशन, गेट पॉगबा लेफ्ट में, मतलब व्हेन यू सब इन किसी को भी, तो वो होगा तो मतलब वी कैन एक्चुअली डू वेल। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई वांट, बट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। For me, my simple reasoning is rather than overthinking चीजें, okay, we might be overrun in the midfield, जो हुआ है, I think को 4 मिडफील्डर लगा लोगे फिर भी होना होगा तो होगा ही। अपने Yeah. बहुत मूडी प्लेयर्स है,
ठीक है, I would rather go with something that has worked, that has created a lot of chances for us. एक सेट फॉर्मूला मिला है जहां पर थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है. Let's stick with it. Let's stick with it. Yeah. And if we try something and it doesn't come off, I think थोड़ा momentum का भी चीज है. We are not in good momentum, and Atletico Madrid is very very soon. And it's again a defensive team where we'll need to break it. जहाँ पर बहुत सारे tactical decisions लिए जाएंगे. So, and this is like the last straw. अगर कल यूनाइटेड हारती है तो थियोरेटिकली आल्सो आई डोंट सी देम गोइंग एनीवेयर नियर टॉप 4 फॉर द सीजन. क्लासिक 6 पॉइंटर. और अगर स्पर्स हारती है तो दे विल बी एज गुड एज यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स और गेम्स में ज्यादा फर्क भाई, नहीं रह जाएगा. विल बी 5 पॉइंट उनको साइड विद 2 गेम्स का डिफरेंस. उनको तोड़ना होगा कल. मतलब तोड़ना मतलब कुत्ता बना. Because We have I to guess win tomorrow. It's a must win tomorrow. this will be the first time since we play them after they mauled us at Old Trafford. Return, you know, the first time we are playing them at Old Trafford after that big win of theirs. 6-1 So- वाला. Yeah. So we have to kind of. I don't care how the goals come out, but whatever they do, खेलना है भाई. Need goals, a lot of them. It's a must win tomorrow. We can't afford to drop points. I still feel कि Arsenal हमारे could be the most dangerous compared to Spurs because Arsenal के अभी भी dangerous. We have a games game हैं. in hand against Arsenal as well. पर वो वही गेम तो. का अफेक्ट आना, वो गेम इम्पोर्टेंट होना, वो कल के गेम पे डिपेंड करता है. अगर आप कल हार गए ना तो खत्म हो गया. हाँ खत्म हो गया. या I agree. ये दो गेम्स और हमारे लिए बहुत केन क्रूशियल. का फॉर्म में आना बहुत बहुत गलत टाइम पे केन फॉर्म में आया है. यार आएगा ना, मतलब पूरा सीजन कुछ नहीं किया है, कभी तो आएगा ना, 2-4 गोल मारेगा ना. ठीक है, नेचुरल है. रिवाज हैज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू यू गाइस, हु विल बी आवर परफेक्ट सीडीएम इन अपकमिंग समर विंडो? Tchouaméni, परफेक्ट. end of. पर Tchouaméni के लिए there will be a lot of big clubs I think going for him. He'll not be cheap. I think he'll be Definitely, a मतलब 60-70 I'm not saying million. realistic, but perfect CDM मेरे को उसके अलावा कोई लग नहीं रहा. Declan Rice, I would have told Declan Rice, but generally वो I don't think so. वो वेस्ट हैम के लिए भी सोल पिवट खेल रहा है. Actually, my very good friend Vivek has been suggesting Ruben Neves, saying that he's someone that we need more than when it comes to someone like Rice, who is a more hustling, bustling guy. अपने पास वो McTominay है, अपना McTominay उसका स्कॉटिश वर्जन ही है. मतलब थोड़ा पानी से वाटर डाउन कर दो तो McTominay बन जाएगा डिक्लेन राइस का. तो मतलब वही तो है अपने पास. अपने को कोई ऐसा चाहिए जो गेम को कंट्रोल करे, जो उसकी बात सही है. Like I kind of agree with him. I don't agree with the Ruben Neves thing, but I agree with that. We need a conductor. We need a guy who can control the momentum of the game. अभी तो क्या हो रहा है कि like we have zero control over the whole fucking middle third. Do you guys think we badly missed out on Kamavinga? Honest answers. बहुत आया नहीं ना, आया नहीं. वो So बहुत we tried, perfect आया signing. नहीं. परफेक्ट हालांकि साइनिंग भी आया नहीं. जूड बेलिंगम भी आया नहीं. नहीं मैड्रिड के सामने हो ना तो we cannot say that we missed out. It's just that they did not choose us. Look, there's only 3 clubs in this world who you could say that you cannot beat them because of their thing, and one of them is Madrid, the other is Barcelona, the other is Bayern. Barcelona तो अभी गरीब हो गया, पहले था, I agree, but the other is Bayern and the third is Juventus. These 3 clubs, if a player goes to them instead of us, you can't say that we missed out. It was just because that club has more attraction because they kind of win more trophies than us right now. So if they're considering Kamavinga as their future, do you think there is a player there for us? I mean, not Kamavinga. I think apart from them, they are midfielders. Valverde उनका कुछ अच्छा है, मैंने ऐसा सुना है. Personally, I would say I don't watch a lot of Madrid games, so I'm not that aware. But बहुत लोगों से सुना है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है. तो he's a very good player. He's a very good player. हो सकता है, नहीं हो सकता. Because honestly speaking, I think Kamavinga is mostly bought as a succession plan to Casemiro, and the way he's played. नहीं, but कल if you see वो मतलब he was replacing Cruz. हाँ, तो I get it. मतलब more of के Casemiro से ज्यादा वो मेरे को Cruz का replacement लग रहा है Kamavinga. वो अपना वो बेनासेर का भी बहुत सुना है. Like I have been reading about how Benacer is like, he does everything that we want. Basically,
controls the game, has a very good tackle, has a very good interception and a brain when it comes See, to like defensively conducting the game. So see, I I feel think we this need a question. conductor. Like when you look at when Matic plays well, we look very good. And the reason for that is because he conducts the game. Like he will calm everything down, just beat a couple of presses, and then just easily pass it to the nearest guy, play and move. And I think we need that. We don't need. That is why I say that we don't need a Declan Rice because we don't need a hustling, एक bustling, नाम in your face एक guy. नाम बीच में आई थिंक विवेक he was mentioning Coop Miners. Last summer he was mentioning Coop Miners, but I haven't actually followed him कि वो उसका फॉर्म कैसा चल रहा है and if he I will actually fit in at What about United. what about? So if we go for Rice, it will be 100 million signing. Easy, What about? easy. एंड इट्स Uh, वेस्ट आई वुड से मतलब ही वेस्ट नहीं है इंग्लिश प्लेयर है ना जाने दो उसको वो वेस्ट है टैक्स ही अपने को मरवा देगा उसके टैक्स में एक अच्छा प्लेयर आ जाएगा फ्रेंच का exactly. That's where I was coming at. What about a combination of Neves and someone like Chouameni? वो भी उतना ही कॉस्ट वो करेगा और अब बहुत थोड़ा अच्छा बहुत ऊपर होगा नीचे. नेवेस प्लस Chouameni But provided we get Chouameni. नेवेस के साथ Obviously. if you pair with Declan Rice या कोई और I don't think so मतलब वो उतना वर्क करेगा क्योंकि again Chouameni is perfect यार मतलब I just like him very much. I mean, I'll go through the comments very quickly. I was very Yes, fond of this Vignesh. player, Zakaria. But this how's he I going? mean, not only CDM, but CDM obviously is a crucial position. This question, in my opinion, depends on who we get. The type of manager. Because if we get someone like Pochettino, just for an example, who likes to play 4-3-3. Sorry. So in a 4-3-3, if you need a soul holder, then you need to look for that kind of players. So as a soul holder, does Ruben Neves works? No. It, he's not a player who can play as a single defensive midfielder, a single holder. He can't play that. So I think it depends on the type of manager we get. Okay, let's go through the comments quickly. Krishna says ये सब इसके लिए ऑप्शन ही नहीं है. मगवार, मैकटोमनी, शॉ एंड बिसाका को कोई भी ना ले, बस ये मजबूरी के सिलेक्शन होते हैं. आई Agreed. थिंक दैट वाज ऑन व्हेन आई सेड मैगवायर को तो खिलना किसी को हाँ. खिलवाना नहीं है बट Exactly. Yeah. If कैप्टन है United तो qualify खेलेंगे for quarterfinals, we are going to face Real Madrid. Ronaldo coming back to Bernabeu. Thoughts? पहले qualify होने दो, ठीक है? इज दैट एक्चुअली फिर अ थिंग opposition लाइक की बात करते हैं. नहीं ऑनेस्टली आई एम आस्किंग इफ वी क्वालिफाई डू वी फेस मैड्रिड ना वो गोले We can घूमेंगे Anyone, ना. face anyone, right? anyone. ओके We Anyone. can face even City, Liverpool में से कोई भी एक आ सकता है. Yes, yes. या ना आई थॉट शुभम कि says वो you. कभी ग्रुप डिसाइड नहीं कर देते कभी किए थे एक बार बीच वो में किया था वो ग्रुप सिर्फ राउंड डिसाइड ऑफ 16 के लिए होता है. हाँ, वो ओके राउंड ऑफ 16 का था. हाँ मतलब इसलिए मैं कंफ्यूजन में था Your या views सॉरी on Madrid performance, सारा Madrid. शुभम, इस पे हमने लाइव डिस्कशन किया है पोस्ट मैच, आप जाके देख लो. कल भी उसके बारे में बात किया तो 2 नाइट हो गए, अब लास्ट नाइट नहीं है, 2 नाइट हो गए. इसने गौरव बहुत से जबरदस्त हेलो पार्टी मीत भाई. की. हाँ. हेलो मीत भाई, सच बोलो, आप डर लग रहा है मेरे को, तो लग रहा है कि कोई एक्सपेक्टेशंस रखो. चाहता हूँ हम अच्छा करें ब्रो. एक्सपेक्टेशंस रखो, कुछ बुरा नहीं है, ठीक है? कुछ बुरा नहीं है. हैव एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ, क्यों नहीं रखोगे? पर होप मत रखो मैं तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख रहा भाई. मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस रखो होप एक्सपेक्टेशंस. मत रखो कि वो सही पड़ेंगे यू शुड बी एबल टू डील विद आफ्टरवर्ड्स. और बुरा नहीं है यार अगर ऑप्टिमिस्ट नहीं हो तो आपको, मतलब इफ यू फॉलो एनी स्पोर्ट्स, यू प्ले टू विन एंड यू वांट टू सी योर टीम विन, तो वो तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है. इट्स परफेक्टली फाइन. भाई, Bruno, not that it's Bruno last 2 games want to see it's it. Manchester United. It's about hopes and dreams. क्या कर सकते हैं? Inherent है अपने में. Midfield, Matic, Fred, Bruno, Pogba. Could be. There is a news that Salah and his agent have no intention to accept new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December. Okay, good for Salah. ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको. Both Salah and Klopp leaving in 2023. Maybe. गुड फॉर अस क्लब Good जा for रहा है us क्या? if we make good decisions from here on. हमेशा के लिए नहीं रहेगा यार. जाएगा कभी. हाँ, बट फिर भी I just I want a bully CDM. अमर भाई, आप कल का वीडियो बहुत अच्छे से देखे हो मुझे लगता है.
Tomorrow score line 10-1 and one own goal Maguire. भाई भाई कृष्णा भाई क्या यार यूनाइटेड फीफा में नहीं ऑनलाइन नहीं, मैच मत खेलो आप. इसको यूनाइटेड मीत कलिप्सो को उन्होंने सीरियसली ले लिया है. मीत इसको आकाश से मिला. तुम आकाश से मिलो. सच बोलो मुदित भाई, आई एम हैप्पी फॉर कमिंग, फॉर नॉट कमिंग टू अस. यार ऐसा नहीं है. आई डोंट बिलीव दिस कि मतलब ये क्या नैरेटिव है. यू आर गेटिंग पेड most in the world at one of the highest, most in terms of numbers. I think United will be the most in terms of number of fans as well. तो आप इतने बड़े क्लब में आ रहे हो, आप उसमें खेलने का मौका मिल रहा है, ठीक है. तो क्लब कैसा भी रन कर रहा हो, इफ यू आर अ प्लेयर, ठीक है, तो आपके एस्पिरेशंस ट्रॉफीज वगैरह मैं समझता हूँ, आई एग्री विद इट, बट हमारे यहाँ आने से उनका सब खराब हो जाएगा. दैट आई डोंट अग्री. ये प्लेयर का जो चलता है ना कि यार इसका तो हमने करियर खराब कर दिया, क्या क्या अच्छा कर लेता, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. एंड एक्चुअली में देयर इज अ थिंग राइट कि जो भी नेक्स्ट मैनेजर होगा, जैसा बोलते हैं कि नोबडी विल गो टू यूनाइटेड, नोबडी विल गो टू यूनाइटेड, बट नेक्स्ट मैनेजर हो या नेक्स्ट प्लेयर हो, they will be thinking of coming and being thinking that what if I am that guy, that Ferguson, finally that Who replaces rebuilds the Ferguson, club. that that rebuilds the club, that makes the club the player will think what if I am the next Cantona, the manager will think what if I am the next Sir Alex Ferguson, that I might build a legacy because I will be the guy who will turn this ship around. So वो तो पूरी जिंदगी आई थिंक यूनाइटेड के साथ रहने ही वाला है. तो यूनाइटेड जॉब कामाविंगा विल हो या कोई ऑलवेज भी बी इन हो, डिमांड. yeah यूनाइटेड exactly, मैनेजरियल जॉब हमेशा डिमांड में तो रहेगा ही. and players as well. Like it's the attraction to the shirt. The shirt has, when the David Beckhams and Cristiano Ronaldos wear it and kiss the badges in front of the Stratford, and like people growing up love doing, they want to do that. So वो तो रहेगा ही है always. So Gaurav says कि the name that I shouldn't speak का एग्जाम्पल पे मीत भाई का आ गया तो क्या होगा. मीत तो एक बार भाई बोल चुका है ऑनेस्टली उसका कुछ नहीं नाम. होगा. हाँ तू बोल चुका है. तू बोल चुका है. Not in a negative way, I तू hope. you can यार actually term गौरव, it as the one who must not be named in your life. विघ्नेश तू है ना ईयरफोन्स लेट्स कॉल हिम वोल्डेमॉर्ट. जब चालू हो जाता है Voldemort. ईयरफोन्स. तो अगर वोल्डेमॉर्ट आ गया हमारे क्लब में, ठीक है, भाई भाई आने वही आने वाला है. he- पॉजिटिव बोल दे, तू डर मत. he'll be our manager, हाँ don't ठीक worry. है. पोचेटिनो अगर आ गया तो विल बी अ वेरी गुड टॉप 4 क्लब, ठीक है, बट आई थिंक दैट्स अ सीलिंग. उसका काफी सारा इंस्पिरेशन आता है दैट कम्स फ्रॉम आवर 92 का क्लास. तो देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट हिम, बट देन यू नो एज विघ्नेश ऑलवेज होल्ड्स इन हिज हैंड्स विघ्नेश अ सर अगर बॉटल. पहुंच नहीं आया ना, विघ्नेश सर अगर पहुंच नहीं आया तो तू मीत के सामने तो दिख जाएगा वो भाई 2 दिन बाद शो में आया है, 2 दिन तक शो में नहीं आया ये. जब से मैड्रिड हारी है. I have my reasons for that, और उसको पता है, ये खाली Sure. उंगली कर रहा है अभी बैठे बैठे, बाकी कुछ नहीं. अरे people were commenting where is कुछ तो विघ्नेश. तुम्हारा अच्छा नाम बनाया है. विघ्नेश नहीं Mauricio विघ्नेश something like that. अरे बाप रे देखना पड़ेगा. विघ्नेश Will टिनो. we look back on missing out Kamavinga signing like Cross? I think ये बात हो चुका है. Chouameni is linked to Madrid. हाँ. Chelsea's bank accounts have been frozen, leaving the club facing financial ruin after the government sanctioned have been frozen because banks are being risk averse. Okay. Yeah. So Prajwal is a United fan. Prajwal, खुद की गाड़ियों में जाएंगे और तो क्या. इसके बारे में हम बात कर रहे थे. इसके बारे में हम मैच ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बैकरूम में बात कर रहे थे. तो I think this could open up a space if we talk in some long perspective. अगर अब्रामोविच जाता है, it opens up a space. जो टॉप क्लब्स का एक स्पेस है, and Newcastle is coming up. Be careful about it कि 2 साल में जिस तरीके का पैसे फेंकेंगे, they'll spend money like anything. आप ये स्क्वाड में 300 मिलियन डाल दो, it could be anything. Yeah. So वो जो स्पेस वेकेंट होगा उसको आर्सेनल फिल कर सकता है. दे आर डूइंग बेटर. यूनाइटेड कुड फिल इट इफ दे आर प्लेइंग बेटर, ठीक है. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन फॉर क्लब्स.
प्लेयर्स भी काफी सारे अवेलेबल हो गए। चेल्सी प्लेयर्स आर रियली रियली गुड, उनका लोन सिस्टम भी इतना बड़ा है, दे हैव अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ प्लेयर्स जहां पर ऐसे आप बोल रहे हैं ना कि काफी if these guys go into administration they could be या facing 9 point का डिडक्शन। Reduction. पॉइंट डेफिसिट, हाँ, पॉइंट या डिडक्शन, हाँ। पर वो 9 पे जब आता है ना, तो डोंट बी सरप्राइज्ड कि वो 21 हो जाएगा, और वो 21 से डिमोशन भी दूर नहीं होता है। तो इफ दे गो इन दिस नहीं स्पाइरल, यार, चेल्सी काफी चीजें चेल्सी के लिए डिफिकल्ट हो नहीं होगा, जाता है। चेल्सी का इतना नहीं होगा फॉर No, श्योर। Even then even I after feel that. after going into administration also there are certain things that they have to keep up with, and it's very difficult to keep those up अगर finances नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। It's a Mauricio slippery Vignesh. slope for them. Chelsea is in the worst possible place for a football club. हाँ, राइट नाउ दे ये आर इन साल द वर्स्ट पॉसिबल। भाई ये साला का काफी सीरियस हो गया है। फैब्रिजियो ने डाला है। हाँ, उसका एक्सक्लूसिव आया है, फेब्रिजियो का फर्स्ट फाइनली कुछ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई एक्सक्लूसिव आया होगा। हाँ ऋतुविज अब विल बी साला हैप्पी को टू हियर दिस। So guys, one of the panelists that is missing is Rutvij. He had a little accident, so थोड़ा hip में issue हो गया है। it's fine। His inspiration is Cristiano. Portugal नहीं जाएगा, but still. वो So बेसिकली उसको guys, पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए नहीं आ रहा है। क्योंकि वो आता तो मैं तो रोनाल्डो की लगा देता। रोनाल्डो की, हाँ, पारितोष भाई तो वेट कर रहे हैं, लास्ट 2 पॉडकास्ट से वेट कर रहे हैं। मुदित और फूफा जी इंग्लैंड में कैसे बच जाते हैं। अरे गौरव भाई, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू। आई डोंट थिंक यू आर लिसनिंग टू ऑल माय पॉडकास्ट पूरा थरली, ठीक है। मुदित भाई हैज मेड अ प्रेडिक्शन regarding the upcoming World Cup. He says that England will go into the final and Harry Maguire will score a World Cup final goal. ये इनका प्रेडिक्शन है, ठीक है। हाँ, हम भी कान ऐसे ही कर लेते, पर बड़ा मजा आया, प्रेडिक्शन सही में अच्छा लगा। कभी कभी सच भी हो जाते हैं, मैड्रिड गेम वाला सच हो गया इनका प्रेडिक्शन, तो तब से वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं। एक आध बार बैट भी जीत चुके हैं, बैटिंग करते हैं, ठीक है, ये बताना मत पब्लिकली। और हाँ, ये मैड्रिड हमारा गेम वर्सेस ट्विटर भी रन पीएसजी। करते हैं। जॉब से निकलवाएगा ये। वो बात अलग है, मैच भी हार गए, बट ठीक है। सो सिचुएशन ये है कि हमारा ट्विटर भी रन करते हैं। अगर जॉब से निकल जाए तो हमारे पास एक वैकेंसी है जो ऑलरेडी फिल कर रहे हैं। इतना अच्छा ट्विटर रन Oh my. So you guys should check out our Twitter and Instagram. अब ट्विटर पे जाइए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो इट। वी डू ट्वीट अ लॉट, काफी अच्छा अच्छा न्यूज देते हैं। वी आर रियली रियली गुड एट इट, वी आर ट्राइंग टू बी बेटर। और अगर ना पसंद आए तो मुदित भाई का प्रोफाइल फाइंड करके आप रिपोर्ट कीजिए उनको, ठीक है। इट्स ओपन फॉर एवरीथिंग, क्योंकि अगर अच्छा काम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली यू शुड रिपोर्ट इट, और ना सजेशंस दीजिए हाउ वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट। और हम काफी सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। We want to bring probably some Manchester United players on here as well. उसके पहले हम काफी थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं। I cannot give a confirmed timeline कि कब होगा, but it's in the pipeline. So and we are starting with fan of the week as well. Our first fan will be Gaurav Pandit, who has reached out to us as well. तो उनको हम लाएंगे। I am not confirming कब आएंगे वो, but very very soon. And we are closing in on our first month. हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होगा कल। इन फर्स्ट मंथ आई वांट टू टॉक अबाउट अ फ्यू स्टैट्स, ठीक है। मुदित भाई हर बार कहते हैं एक स्टेट बताऊं करके शुरू हो जाता है, आज मैं स्टेट्स बता रहा हूँ, ठीक है। वी हैव क्रॉस्ड मैं भी ओवर स्टैट ही बोलता हूँ। 6000 स्टेट नहीं बोलता मैं। state we have crossed over 6000 views in our first month. We have close to 400 subscribers. That's I'm talking about YouTube. That's huge for us. हम में से कोई creators नहीं है। We started one day out of the love of Manchester United. We've been following Manchester United since a long time. तो एक दिन बस शुरू करने की इच्छा हो गई, and we started, and there has been a lot of acceptance from you all. I want to thank you so much. I want to thank you all for it. Thank you so much. We love you all. Keep supporting us, and if you want to be here, you can always get in touch with us. और हाँ, शायद 1000
as our subscribers pay, will be giving away some few more things. I'll take comments quickly and then we'll get into discussion again. पॉगबा को निकालो. गुड नाइट अमर. या डेफिनेटली भाई, ये पॉच न्यूकासल चला जाए, यूनाइटेड वो भी है. हाँ पॉसिबल. जाने दो. न्यू प्रेडिक्शन, क्वाड्रुपल कमिंग. बिना साला के. नहीं ही इज अ लिवरपूल फैन. सही बात है. देखा नीचे YNWA था. 2 बार कमेंट. भाई खेलने फाइनल ब्रो, विश्वास है मुझे, है कुछ. पिकाचू टीम पहुंची. व्हाट डू यू मीन बाय रोनाल्डो की लगा देता चैंपियंस लीग में? पता है ना किसकी वजह से नहीं है तो यूरोपा लीग से अभी तक बाहर हो गए होते. कृष्णा से आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन टू यू परितोष. हाँ, I know it's a question to me, but then 10 games 1 goal is the reply, so I mean what else can I say? It's not that he's not a good player, it's just that he's not what we expected and it's not where he is. So he's a liability most games than a asset. So yeah, that's it. मैं और क्या बोल सकता हूँ अब? Like what can I say that is not on the pitch, honestly? Vignesh is getting ready to say something. Vignesh. No, I'm not gonna say anything. Do you think, Paritosh, Yeah, we could have utilized Ronaldo in a much better way? Yeah, we could have. Actually, Greenwood thing fucked it up. Yeah, honestly saying, I get we it. burned Ronaldo. Like But- वो नहीं हुआ even- होता ना. Even if we are talking about Greenwood, when Ronaldo was even playing with Greenwood initially, Greenwood was not. They were not matching up. I mean, I could see it going somewhere, but they still had issues. Greenwood especially. Yeah, they had it. It's just that Greenwood होता तो we could have rotated Ronaldo more. We could have rested him more and kind of. Yeah, so we could have put him in a prime position to actually do what he does better instead of playing him in every single match. I get it. And Ronaldo feeds on deliveries. Ronaldo feeds Yeah, on. exactly. हाँ, वो तो है which ही. we don't वो तो हमारा have. issue है ही. Which we don't have. So, It's a lot of things. I think we brought a player who is not at his peak right now. He's in his twilight where he needs support from others. Like हम सबने ऐसा रोनाल्डो देखा हुआ है कि he did not need anyone. You give him like basic average players and he would still make the team work. Now you Yeah. need him. You need players around him to make him work. Yeah. And then we put him in a dysfunctional team. And then on top of it, the only backup that we had went away due to stupid such things. And so we kind of burned him out completely. So ऐसा वो double triple negative उस पे build हो गया है वो. So it's not helping him, it's not helping us, all of it. So there was a comment by Ralf Ragnick. Vignesh, continue after this. Ralf Ragnick said that he was asked that, do you think that Ronaldo is happy at Manchester United? So there were reports that he flew to Portugal without informing the club. So Ralf Ragnick's answer was, it's not I haven't talked with him that whether he is happy in Manchester and at United. And it's something that has happened in past. I don't look towards the past. I want to talk about today and tomorrow. That's what Ralf said. That's technically deflection. Yeah. It's technically deflecting the whole thing. So, look, there must be something. To be honest, Ronaldo is not going to stay at a club that is not in the Champions League. Forget that. So he's already trying to move away from it. That is clear. Like it is clear as daylight. And if people can't see it, then I don't know what to say. But it is getting clearer by the day, right? And look, it's thing. Like I can understand why he wants to be in a Champions League club. Why he finds, because he's a name, but he's not the same player that he was like 3 years ago. And right now the club needs him more than he needs the club. But it is what it is. Look, it's not his fault, as I said. Greenwood's issues, Greenwood being an asshole and doing what he did, plus Cavani going on a South American trip and deciding that let's just chill for like 6 months. Yeah, it does not help. It does not help Ronaldo or the club or the whole team anyways. So yeah, so it is what it is. Next year देखेंगे क्या होगा. But ये जो 10 गेम बचे हैं,
10 games plus UCL games. Do you think ये 10 game में Cavani could play a pivotal role because जितने भी बार pitch पे आया, as much as we slate him for not being available, which is an issue, I totally भाई agree. साहब But every इंटरनेशनल है, time he's on the pitch, इंटरनेशल बीच में है, दो इंटरनेशनल इंटरनेशनल 2 मैच गेम्स है है बीच बीच में, में, वो वापस गायब होने वाला है, वापस नहीं आने वाला है, 5 गेम खेलेगा वहां टोटल, जाएगा, खत्म है उसका उसका वहां सीजन। उसका वो वहां दोनों उसका गेम्स में 90 मिनट्स खेलेगा, वहां दोनों गेम्स में 90 हाँ। मिनट्स खेलेगा उसका वो और फिर प्लान्ड है खत्म। पूरा, उसका पूरा शेड्यूल हम्म प्लान्ड है till the end of the season and he knows where he wants to go next. यार कहीं So एक आई घंटा भी आई वाज हमारे लिए हियरिंग खेलने नहीं वाला। I I was don't hearing these reports कि मतलब someone asked कि why is Cavani so disinterested to play for us, and someone told कि वो जो racism वाला issue हुआ था, we didn't back him ऐसे publicly we didn't back him, तो वो एक कुछ part play किया है. Do you think वो actually it makes sense or not? I don't think so. I think सेम। that was rectified in the dressing room and in the club internally, and it came up very fast and it went down also very fast because people understood that it is a slang. It is a good slang in Uruguay. It's not something negative. It's outside the country. It is negative. They consider it And negative. and he could hear the fans, right? Like they still sing his Yeah. name. Hmm. Old Trafford is bouncing with his name week in week out, so it's not as if he does not know that. Look, Yeah. all the thing is that he cares about Uruguay more than anything else, and that he is going to play for them primarily. So at this point, it is just we have to just hope that जितना रोनाल्डो को घिस सके उसमें घिसे और वो जो निकाल पाए वो निकाले ऐसा. I think earlier Krishna has a very actually good point in the Cavani had chat. given an interview. Cavani had given an interview that injuries are not helping him. Seeing the lads day in day out for training and matches, he's been not been able to do that. That's something he doesn't like. He wants to play as much as possible. On the similar lines, he gave an interview. That's where I'm coming from. Yeah, it could be that. Look, I honestly don't know. Want to be honest, it is just that internationals में 90 minutes खेलता है. Fred also plays. He also goes to South America. He's there in the next game. You don't see Cavani, and then he misses the next match, and then he misses the next match, and then he misses the next match. So, and it's not just a one-time thing. Look, if it happens once, it's okay. If it happens twice, it's still okay. It happens after every single international break. It's been 2 years now, so it's not a new thing. So now it's look, I have given up. To be honest, on Cavani, it's done. Like so the faster May comes, it's easier so that he goes and we can actually find someone who will want to play for this club regularly. Definitely. You wanted to talk about this comment, so I'll read Yes. it out. Krishna says problem is with United. They find good players and sign them. They saw under week and they signed him, but कहाँ खिलाया कुछ आइडिया नहीं. Then Ronaldo available हुआ तो sign कर लिया. क्या सच में जरूरत है? Yes, एक Paritosh. I मिनट completely agree with you. एक मिनट परितोष, before Hmm. we start this, ये देखो. Wait, share it. किया ना स्क्रीन, दिख रहा है? Hmm. दिख रहा है ये? अरे यार इसको कौन देखे यार? क्या रात बिगाड़ रहे हो आप? क्या यार, मेरे को लगा रोनाल्डो को कुछ तो देखा रे, क्या दलिंदर देखा रे. मेरे को भी पूरा वही मूड था ऑफ कि कर रोनाल्डो दिया. का कुछ होगा. This is the same guy. ये Mudit ये is the ये same वो guy. वाला- He predicted a World Cup final goal for Harry Maguire. I'm saying it again. वो नहीं क्या, वो फीफा का मीम है, देखो वो एक क्या फीफा गेम में कैरेक्टर है जो हर स्टेडियम में डिफरेंट किट में दिखता है, यू नो, गोल सेलिब्रेट करते हुए. वीडियो गेम की बात कर रहा हूँ मैं, वैसा ही. अभी तो एक क्या हफ्ते breaking पहले तो news आ रहा एनबीए है. में था ना, हफ्ते पहले हाँ. वो जियानी से किसी को बता रहा था कि तू ये है, तू वो है, क्या कर रहा था 1-2 हफ्ते Of, पहले. पागल है. he is an Arsenal fan. He is an Arsenal fan. और स्पर्स ड्रेसिंग रूम में जाके ये कर रहा है. What the fuck? होता है विघ्नेश, होता भाई है. प्रीमियर लीग इंडिया is very insulting. मतलब they don't Cringy represent है, Indian cringe football worthy fans. है. The fans here, club football fans especially for Premier League, they don't represent us. They represent us a very bad, बहुत गंदा भाई represent. रणवीर सिंह को कैसे, ठीक है जान रणवीर, I don't want to get into There is that. a breaking news I want to talk about. So David Ornstein has said that MUFC have met some of the candidates for permanent role now and are getting on with that process. Dialogue is flowing.
यार ये बताओ मल्टीपल कैंडिडेट से मिलने की रिपोर्ट्स बार-बार क्यों आ रही है? नहीं ये दिस इज Is it जस्ट a डिफ्लेक्शन, नहीं दिस इज जस्ट प्योर डिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्लब एट दिस पॉइंट। Deflection वो from चाहते that drubbing we got with City from City. वो फाइनलाइज कर दिया होगा। मुदीर भाई ने शायद पिछले पॉडकास्ट में यही बोला था कि दे हैव द मैनेजर सॉर्टेड। और ये मुदित लोग भाई ने ये पॉडकास्ट में भी सही बोला था, ये डिफ्लेक्शन ही कर रहे हैं, जो भी कुछ भी हाँ खराब आता है तो डिफ्लेक्शन ही मैनेजर पे जाएगा, डिफ्लेक्ट कल होता है। आएंगे नया हाँ मैनेजर का नया कुछ आ जाएगा, मतलब वो तो पीआर मीडिया चलता रहेगा अपना। पीआरएफसी, हम लोग पीआरएफसी हैं। आज एक्चुअली As डेविड Jay ऑनस्टीन Shilpe ने भी rightly कहा says. है ना कि इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। होना ही है ना, इट्स स्टेटिंग द ऑब्वियस ना भाई। Siddharth says Paritosh in the house. आपको सिद्धार्थ भाई आज लेट हो आप? यूजुअली टाइम पे आ जाते हो। क्या बोल रहा था विघ्नेश? नहीं, डू यू गाइस थिंक कि अप्रैल के पहले विल बी गेटिंग अ न्यूज़? इन न्यूज आ जाएगी। अप्रैल स्टार्ट तक तो आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तब तक तो बी वेरी स्कैर्ड। हाँ कंसर्न है। मेरा भी एक्चुअली वही मार्च है, एंड अप्रैल अप्रैल फर्स्ट एंड। वीक तक कुछ ना कुछ कंक्रीट आ जाना चाहिए नेक्स्ट मैनेजर के बारे में। थोड़ा सा और ऐसा and यू नो अभी वी आर इन द मिडल ऑफ द मार्च और थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है कि अगर तब तक न्यूज़ नहीं आया तो वेयर आर वी गोइंग? तो वी आर ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता. We are going nowhere anyway. Apart from that, there was news that Eric Ten Hag is, learning about the players from intermediaries. यार उसका क्या इंग्लिश प्लेयर ये का का लर्न न्यूज आ करना। रहा है. ये सेम न्यूज़ पोस्टेटिनो के साथ भी आया है, पता है? मतलब हाँ उसको सेम सेम ना, इंटरमीडिएट्स लिटरली की क्या सेम, जरूरत सिर्फ है? सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है। क्योंकि नो वन हैज अ क्लू राइट दोनों के बीच में कौन होने वाला है। इसलिए वो हाँ, जिसका दोनों नाम है वही सेम न्यूज चिपकाओ, कॉपी पेस्ट खत्म हो गया अपना काम। नहीं सो एंड द एवरी थिंग इज लिटरली शायद सेम मॉर्निंग न्यूज़ आया है, लिटरली सेम न्यूज़ आया है। एवरी सिर्फ मॉर्निंग नाम चेंज है मैनेजर का, बाकी सेम लाइंस है। every morning on हाँ websites usually there is a team meeting called. There is an editorial call that's taken in which they divide the day into four parts. And if you're talking about Manchester United most of the day, because the managerial situation is first, every 3 hours there will be some new development coming because it's already planted. So ज़्यादा लोड नहीं लगता. और ऑनेस्टली आई थिंक क्लब का भी ऐसा ही है, क्लब को भी नहीं पता होगा कौन आ रहा है, तो मतलब एक बंदा हेड वुडवर्ड जाके बोल रहा है कि नहीं नहीं ये अपना टेनाग आ रहा है, और वो मर्डॉक बोल रहा है नहीं नहीं अपना वो आ रहा है। सब अपने अपने रिपोर्टर्स को कुछ ना कुछ न्यूज दे रहे हैं, एंड में फाइनल करेंगे लास्ट दिन पर कॉइन टॉस करके कि कौन आएगा। जब तक डेविड ऑनस्टीन ये नहीं बोलते कि कौन से मैनेजर की तरफ यूनाइटेड इज मोर लीनिंग, आई एम नॉट बिलीविंग इन एनीथिंग। So Paritosh, you wanted to talk about a comment. Let's talk about it. मिस हो गया है. हाँ वो वैंडरबीक वाला कृष्णा का। नहीं. हाँ. Bring it up. Here. Yeah, They sign I unnecessary agree. players. No, I would say Van der Beek was signed. I have said it in the past. I'm not sure if I've said it here, but in the circles I've said it, and I still feel that Van der Beek was signed because we thought Pogba was going that year. वो रिप्लेसमेंट था Pogba का, एंड Pogba गया नहीं, तो अभी लग गई क्योंकि क्या जगह नहीं रही. Like a fit Pogba takes over Van der Beek. And then they also realized that Van der Beek is technically Bruno's substitute. Like he's a pound for pound Bruno player, a position where Bruno plays, and we got completely fucked up over there because Bruno does not miss games. He barely misses games, right? He's very fit. He does not have injuries, and we just could not use Van der Beek. Like a lot of people tell me कि उसको डाल दो CDM में, उसको डालो CM में, यूज नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा. But the thing is that look, you see two managers not using him, there must be something, right? There must be something what Rangnick or what Ole saw that made them sure that Fred was a better choice as a CDM than Van der Beek, right? Or Matic on his last legs, or McTominay, who does not literally be a passing option at times. So there must be a reason, right, when two managers don't do that. So Van der Beek, I think it's a very odd signing. I completely agree with Krishna here that we completely do not plan our signings. Like Ronaldo का signing ही देख लो, as he mentioned, like available हुआ तो ले लिया. The whole conversation at that point was to get a center mid, and what the management said at that time was कि हमारे पास पैसे नहीं है. It is depending on outgoings, and then we sign a 36-year-old
player for 16 million and 500k wages out of the blue just because he became available. Look, I understand that he was going to City, and I would have fucking lost it if he had won the blue of Manchester City. I could not have taken it, and I am happy between that he chose us and he came here. But the thing is that if we even bought him, we should have still invested in a midfielder to actually make it important enough. Now you have Ronaldo in the team and you don't have a functional team. You see what has happened this year. Ole lost his job because of that, and now we are out of top four, out of 2 cups, and most likely out of the Champions League in this round or the next. We are not going to compete. So that is the thing. हाँ, मुझे मुदित भाई भाई आप क्या आप बोल रहे थे? मुंडी अभी को मैं हिला कुछ रहे भी हो? नहीं बोलूंगा, वापस ये अमित कुछ बोल देगा मेरे को। मैं अरे अभी अरे I want your opinion on this. I want your opinion on this. ठीक है, पहले बात बता देता हूँ. So David Ornstein also said that they want to make a decision as soon as they can on board of Manchester United. managerial situation. I don't think it will be too long before we get a clear idea for who it's going to be. मुदित भाई, just another PR spin या फिर सच में ये decision बहुत close है? डिसीजन यार स्पिनर Others. PR spin. आपने I तो don't know. I think everything मुझे United ज्यादा puts out is a PR spin. वैसे कुछ बोल नहीं सकते, but मेरा तो पर्सनल Ornstein लेवल is पे ऐसा pretty है कि reliable. That's all I know. और I think end of April तक, sorry, end of March तक शायद कुछ आ जाए. मेरा तो पर्सनल ऐसा व्यू है कि जब तक मैं प्लेयर को या मैनेजर को अपना शर्ट पहनते हुए ऐसे पहन के ऐसे फोटो लेते हुए नहीं देखो ना, तब तक मैं तो नहीं मानने वाला कि उसने साइन किया है। और अपने जिंदगी में ऐसा भी देख लिया है कि ऐसा शर्ट होल्ड करने के बाद भी प्लेयर दूसरे क्लब में गया है। तो प्लेयर मतलब दूसरे क्लब में गया है। मेरे पास तो ऐसा भरोसा जैसा मैं रखता ही नहीं हूँ, मैं पीयर्स भी नहीं बोलता हूँ सबको। क्या हो गया? किसको हो गया? क्या हुआ? अरे गाना अकेले मत सुनो यार। अरे गलती से बोल सॉरी। अच्छा तू ना। अच्छा, so I want to talk about the last piece here जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से. That was Marcus Rashford. He said that again that he has lots of talents, but उसको जो ट्रेनिंग परफॉर्मेंसेस है उससे कन्वर्ट करना है onto the pitch. Do you guys think it's still, putting out an image of Marcus Rashford ki he's a very good player, this, that, but deep inside he knows that he'll not start him very, very soon. He'll not start him. I think he's just Yeah. being a manager backing his young player, telling him that just do what you do on the training ground on the pitch and you will be in the first team again. Exactly. वही I think he's just protecting him rather than making the situation even worse by saying something. बस भाई वैसे ही चलने दो। कोई भी मैनेजर yeah. No, Rashford के see him against he's not starting going to anytime soon. speak against. He's definitely going to back him. Suarez is greater than CR7 this season. I Don't haven't do followed videos. Luis Suarez. Exactly. Honestly, Same. Not at all. And Hestro Gaming, I'm just telling you, I know you are a Liverpool fan, but let me tell you this: United will beat Luis Suarez at Old Trafford. Yeah. मरते गिरते पड़ते कैसे भी यूनाइटेड इज गोइंग थ्रू, योर लुइस सुआरेज इज नॉट. भाई चेल्सी के ऊपर 5 मिनट पहले आया है. they will have to they might be getting a minus points first of all, not for next season, this season itself, अभी के अभी तुरंत. And एक और चीज था, part of their stadium will be shut totally. Oh bhai, That's huge. That's big. There are fears that the club won't be able to reach the end of the season too. Oh bhai. And They will be staff has been sacked already. Who? Staff. The staff not sacked, probably it's not sacked. They've laid off follow कर लिया होगा. They stood down basically, not follow. They simply left. They're fucked. Oh my. Guys, if you haven't heard, Udit bhai, huge news coming in for Chelsea Football Club.
that they might not be able to make it to the end of the season. They might be point deduction right now. Their assets are frozen, basically right now. Apart from that, some of the staff have already resigned. Apparently, resigned and will be the right word here, I think, rather than being sacked. Uh, So Chelsea have appealed to the government that they could not provide security, stewarding, and catering in some areas of the ground and not others, insisting that their only option would be to shut areas or full stadium within Stamford Bridge. So they are going to continue to pay the staff members even if they have stood down, but freelance and contract staff will not be paid. Huge. एक और न्यूज आ रही है कि PSG are looking for a new sporting director according to Romain Molina. Apparently he's very reliable. तो ये Molina, repercussions हो सकते हैं पोचेटिनो वाला. नहीं नहीं, I Moli, have this it's L or R. Romain Molina. Molina. Molina, he's tier 1. So मतलब Pochettino doesn't get well with Leonardo. So if they are actually sacking Leonardo, then हो सकता है repercussions हो. Poch stays. Poch stays, Poch goes. I Come, just come, hope he stays Manchester at United. PSG. Aye, but fuck Chelsea, they're targeting them pura. मतलब it's kind of wrong. As But वो Aditya एग्जांपल says, सेट इन वो एग्जांपल सेट इन क्या बोलते करना ही था यूके गवर्नमेंट को. अनफेयर हो या ना हो, बट आई एम पर्सनली एंजॉयिंग. You know, I can't should even the can't even I'm imagine not sure. Chelsea how I'm how not much showing क्या बोलते Chelsea मैं. I'm not Chelsea fan hiding my कैसे bias. feel the pain. Sorry. Technically, I also believe that they are being unfair. They are being targeted. I agree, but it's not an unfair decision when you make a bet with a Russian oligarch. You know what you're going into, and you chanted his name when Ukraine support banners were being done, and you Matt Law chanted his has name Matt saying Law that has he's just added yeah. that Chelsea are trying hard for the license to get amended in the coming days so that they can just complete this season. But someone needs to buy them right now. मतलब if that happens तो सब issue चला जाएगा. But if that doesn't happen, they will try to buy out some time from the government. ये Week पे 3.5 मिलियन बस आंटने का तरीका है मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का. So Aditya says they should make an example by not importing Russian gas and fuel. Bhai, Hesto Gaming, imagine, bhai, I would have loved if Blazers were Russians. भाई चलता है भाई, वो टेम्पररी पेन मेरे को बिल्कुल चलता है, नहीं 1 साल के लिए 2 साल के लिए. एक्चुअली आदित्य वही वही बात है कि हमारी जो स्टार्टिंग में बात हुई ये पॉडकास्ट पे कि दे आर मेकिंग स्केपगोट आउट ऑफ अब्रामोविच. एवरीबडी नोज दैट बिकॉज द यूके मीडिया नीड्स द यूके गवर्नमेंट नीड्स अ विन एंड दिस इज हाउ दे आर गोना टेक देयर विन by taking down Chelsea, and they are okay with that. So, but again, like there's nothing wrong with it, right? At the end of the day, Abramovich is a guy who supported Putin, who is inside Putin's circle and has helped him in many ways and has got his money through shady means, right? So Exactly, yeah. at He's the an end of the accomplice. day, yeah, exactly. So at the end of the day, yes, he's being targeted. Yes, that is wrong for Chelsea, but it still is what it is. They let an oligarch take them. They sang his name. They called him the greatest ever. So then you have to deal with it as well, Exactly. right? If you celebrate Champions League titles by singing his name, then you also celebrate. Then also you cry over this because it is what it is. Yeah. It's just hypocrisy. Ban Russian goods, at least you need them. है 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 आदित्य, है. अब क्या करें, वहां मजबूरी आती है उनकी गवर्नमेंट की. भाई महंगा But पड़ेगा. but this point deduction thing that just came up, all the updates that Mudit just gave right now are very, very, very crazy, to be honest. Like, and this is not a small club. Like, this is not your Derby County It's not Bolton, Derby County. or yeah, it is not Derby County. It's not Bolton. It's not your Fulhams. This is literally the Big Four, the original Big Four club. So
it is going to have ripples across the world. Like across the world. It is not just the UK. Like with all due respect to all the clubs that I named, these are historical institutions, and I feel the pain for the likes of Derby and Bolton too. Because for me, growing up, Bolton was like a pure Premier League club. You need Bolton. You need Bolton in Premier League. Like it's Yeah. the Premier League is only the Premier League if Bolton is there. Bolton So wanted. yeah, but Chelsea is huge. Chelsea is Liverpool, United, Arsenal, Chelsea. These are the original Big big four. four, the OGs. Hasru, I think we saw it coming. It was for next season, most of the things which we heard. But then it could have been a possibility जिस direction में चीजें जा रही थी. Are you surprised really? I am not surprised with this. I'm not surprised. ये लोग चेल्सी एफसी को लिक्विडेट करा सकते हैं अभी. गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर दैट. आई फील दैट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल. ठीक है, जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे आर. इट विल बी अ शॉक डेफिनेटली, बट अगर उनको लीग से बाहर भी दे पुट इट आउट, यू नो, दे सेंड हिम टू The second UK needs division a of the. win. As I said, the government is facing a lot of issues there. Like they are under crazy pressure right now. So वो scapegoat बना देगी. Like for the betterment of themselves, they will kill a club. I completely agree with Meet here. Yes, and talk. Let's talk about, you know, a hypothetical if this happens. What about the players? What about the staff? Yes, there will be few that will be really affected, but you know what? This staff, this players, they will find another club. They will find another places to go to. ठीक है, It will ऐसा be नहीं a होगा कि आप Juventus फुटबॉलिंग वर्ल्ड से. situation. A 2006 Calciopoli Juventus situation. The big stars will start like it would be a mass exodus of superstars, and people would be jumping left, right, and center to get all of them. So crazy levels, like unheard of in the Premier League, to be honest. Like हमने Premier League में तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है. Like this kind of exodus has never happened in the Premier Yeah, League. man, it's too much. Yeah. Could it affect on their No. CL and Cup? जिस तरीके से जा रहा है हेस्टो गेमिंग, आई थिंक. और यार एक आपका रियल नेम भी बता दो ताकि आपको रेफरेंस करने में थोड़ा इजी हो. बट यस, आई फील दैट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, डोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू नो देयर इज अ वॉक ओवर गिवन टू अदर क्लब्स. And they As might not even simple to as not be able to travel if uh, their 20,000 clause. accounts are हाँ frozen. भाई. How do you travel with a 40-man Tuchel. people to league? Tuchel has passed a comment. इसने किया था ना ये. So far as we trust each other, this will not change. As long as we have enough shirts and a bus to drive to the games, we will be there and we will compete hard. I won't be surprised if this guy funds everything and the players come around and fund their own bus and jerseys and complete the season. They could, of course. They are millionaires, man. Of course, they can afford They to, can afford. to do it. Multi-millionaires, I They would could. say. Yeah, Millionaires is a multi-millionaires. understatement. So, Yeah. I mean that would be great to see. To not great in the sense that what is happening to the club, but it would put on a lot of respect for them. Yeah. Sad है. एक hypothetical देता हूँ. If it was Manchester United instead of Chelsea, what would be the reaction? I would have Will people actually, be I was actually gonna celebrating? say it here. Everybody was going to be celebrating this. Like, it is not हाँ. even a question, honestly. Like, I can't believe this is a question. That there would be parties across UK. Look, UK. हाँ. we have scarred every big club in the Premier League, even the small clubs, for 26 years. They are hoping for this. And to be honest, मैं actually पूछने वाला था कि यार ये Glazers का कुछ relation नहीं निकल रहा रशियन से. I'm okay to take a 9-point deduction of even a championship season if the Glazers go away at this point, to be honest. To be really कहना honest, easy it है, is but far better. अपनी in the long किस्मत run, नहीं है. yes. अपनी किस्मत ऐसी नहीं है रे. And look, But I don't think. make no second thoughts about it. Everybody would have been celebrating if it was Manchester United. Everybody would have been Exactly. celebrating if this was Liverpool. Everybody would have been Everybody celebrating. would have been celebrating if this was Arsenal. It's not just Chelsea. It's the tribalism in football. We would have celebrated the other three clubs equally, and other clubs would have celebrated us equally. So you don't need to be sad about Chelsea when 2 weeks ago you were giving them whatever that came to your mind when they were winning. So honestly, as Shit had said that
he is okay with it. अगर 9 points का deduction होता है and somehow United make it to the top 4 and get Champions League, I won't mind. I don't think we deserve it this season, but I won't mind. Why would we mind? Champions League मिल रहा है bro. Hesto says yes, FSG are also shit, but not that desperate. भाई तुम लोग भी desperate हो, काफी desperate हो. The Liverpool fans I know, they are equally complaining about their ownership. Thankfully, the only difference is that यहाँ पैसे ज्यादा डाले गए हैं यूनाइटेड में, आपके वहाँ पैसे कम डाले गए हैं, बट आपके सेल्स हुए हैं अच्छे अच्छे. यूनाइटेड में सेल्स नहीं हुए प्लेयर्स. उनका मैनेजमेंट अच्छा है. I think read about मैनेजमेंट ने फायदा FSG. उठाया ना. Yeah, FSG 140 actually. million. Yeah, I know, and the FSG actually. I was reading upon that. I think I don't remember the paper, but they had a very good article on how Liverpool turned it around. Like they literally went and hired men in suits, men who were not football guys but were analysts and who knew how to run a fucking football club. And now you can see the boons 5 years later. That is what we don't have. That is what they have. Even with less money, you can make a good football club. And Liverpool did that. Their management did that. So yeah, obviously at one point now they might feel अभी Liverpool को ऐसा लग रहा होगा कि like to compete with the Real Madrids you need more money, but at one point they were competing with Stoke. So that is the turnaround that FSG brought. And to be honest, all 5 of us would be very happy if Manchester United do anything, even 50% of that. To be honest, for our club. Yeah. Definitely. Aditya says, Mauricio Pochettino to United is a done deal according to Webby, who has worked at Manchester United and now the likes of Gary Neville and schools very well. नहीं भाई, Bullshit. नहीं भाई, ठीक है. मैं अपने दोस्त को जानता हूँ अच्छे से. मेरा दोस्त किसी और को वो क्लब में किसी बहुत बढ़िया बंदे को जानता है, तो ये भाई इन्फॉर्मेशन ट्रू है. ये वाली बात हो गई. And do not trust Gary Neville and Paul Scholes. वो साले जबरे हैं. पूरे 2 साल ओले को एक गाली नहीं दी और रैंगनिक को 2 गेम में बोलना चालू कर दिया. 2 गेम में, हाँ, 2 गेम. नहीं, नेविल ने बोला क्या रैंगनिक को? स्कोल्स ने बोला है, आई नो, बट नेविल ने नहीं बोला. नहीं, नेविल का भी कमेंट था. भाई ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं यार. बेचारे सर एलेक्स फर्ग्यूसन को रेस्ट करने दो. नहीं यार, उनको रहने दो. एग्जैक्टली. हाँ, बहुत किया अपने लिए. कम नहीं था क्या? I'm not gonna talk about Klopp ka first interview and what he wanted. Yes, he did very well. He is doing very well. A lot of respect for that. Good manager. But fuck Liverpool. Very good manager. I would like to make it United clear fans. here. Look, this is a very United space. Fuck Liverpool. Yeah. Fuck Liverpool. Regular watcher है by the way. अपना हर stream में आता है. Couldn't care less. अरे. So, guys, अभी तक अगर आपने हमारा ट्विटर चेक नहीं किया तो go and check out our ट्विटर. मजा आ जाएगा. काफी मेहनत करते हैं ट्विटर पे. Go through it. इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करो. Share it with your friends too. और if you haven't subscribed, please subscribe. और आज का लाइक कोटा यार 4 लाइक्स दूर है. 26 आ गए हैं. 4 लोग लाइक कर दो यार. ऐसा मत करो. 30 कर दो. So all of us are working here. Kshitij is completing his post graduation. He'll be working soon. So after that we try to develop content. रात को ये if I tell you Mudit and Vignesh, they were doing their dinner at 11 p.m. और फटाफट डिनर करके इधर आए. So they work so hard behind the scenes. We try to give you the best we can. We give you exclusives. We try to give you insider information as well. ठीक है. So we are trying a lot of things. We want to bring in a lot of things like Manchester United players here. So उसमें time लगेगा of course, but then the journey for that starts today. For that you guys need to help. अगर हम pitch करने भी जाते हैं किसी को कि भाई हमारे चैनल पे आओ, तो we need to show them numbers. We need to show them what kind of a community we are. ठीक है. It's apart from there is no ulterior motive to this. So हमारा pitching थोड़ा easy कर दो. If you have friends who follow Manchester United and stuff, ask them to follow us, subscribe us. Apart from that, we are starting with fan of the week. And our first fan of the week is gonna be Gaurav Pandit.
So we're gonna bring him here. Date अभी तक finalized नहीं है, probably this Sunday. Let's see when it is possible. Uh, and let me take through the final comments and we'll wrap it up from here. So what do you guys think about Luis Enrique if available for coaching hypothetically? I would be Well, open. my number Definitely. one target है अगर ये दो Top नाम्स manager. नहीं है तो, Top but manager. Top manager. sadly not happening. Would take him Not definitely. not enough idea to Ahead of actually. Pochettino and Ten Hag, I would go for Luis Enrique. Definitely. अगर ये दो हॉर्स रेस नहीं होती और वर्ल्ड कप नहीं होता तो ही वर्ल्ड कप नहीं होता, वर्ल्ड कप नहीं होता, 2 hours World रेस Cup छोड़ is दो, the वर्ल्ड कप नहीं होता तो पक्का we could have attempted him. एग्जैक्टली माय नंबर वन प्रेफरेंस अगर वर्ल्ड कप नहीं होता. Definitely. what will happen to Chelsea academy? No Udal idea. bhai, you want to take this? पूरे क्लब के लग गया, अकेडमी का क्या हो गया? So I don't think the academy will be affected as much. In fact, the academy will be not revamped, but they will be given a new set of instructions with regards to the players. They will expect a lot of players going out this summer, especially if the point reduction comes in, or even potentially relegation. काफी कॉन्ट्रैक्ट्स Also, टर्मिनेट होंगे, राइट? काफी कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट होंगे. They might even get a transfer ban. बहुत कुछ हो सकता है. This is still the beginning. So there is a chance that they could recall all their loan players. They have a lot of youngsters on loan, and they could do something with it. They can definitely put out squads. I don't think putting out a squad is an issue for them if big players also leave. And they are pretty damn good players. If you follow Chelsea's academy, they are pretty damn good. So it might turn out to be good in the long run, but as of now, they are fucked. They are fucked. ये जो चैंपियंस लीग गेम आ रहा है उसमें कुछ अफेक्ट पड़ सकता है क्या? मतलब अगर आपके पास असेट्स नहीं है, ठीक है, यू आर सेइंग दैट प्लेयर माइट देमसेल्व्स स्पॉन्सर इट एंड go for the matches and stuff possibly, but Yes, season ka it's funded already. Everything is done. नहीं, जो आपने वो न्यूज़ पढ़े थे उसमें ये भी था ना कि this will affect this season as well. हाँ, might be. मतलब it depends actually. इसमें ऐसा कुछ specific नहीं है कि हो सकता है कि ये week के बाद ही हो जाए, but I think they can that will be kind of looked at already. I think it's kind of a day-to-day thing right now. Like I think Chelsea खुद को idea नहीं होगा क्या हो रहा है. Like कल क्या होगा. Exactly. I think it's a day-to-day thing. We have to see how it evolves. It's gonna be very tough time for Chelsea, the club and the fans. So do you guys think I'm gonna bring up a very painful memory in Manchester United's history, the Munich air disaster. उसके पहले we had to plan our schedule. We were strong armed basically to play that European tie, and we had to report back for the next match. जिसकी वजह से we are trying to get Within a the 48 shot. hours, yeah. Yeah. So my question here is, do you guys see that शायद Chelsea को strong arm किया जाए in terms of Champions League games as well, not just Premier League and the domestic cups? आपको sanction लगाना है, आपको रोकना है. You have 1,000 ways to do it. No, it's just that it's too as I personally feel it's too early to tell. Like किसी को idea नहीं है. Like we did not expect this to happen this fast. अभी इन्होंने जो news पढ़ा, when we started the podcast, we did not talk on this level. Yeah, right? there will We be talked developments about to this. Yeah, we talked about how bad it could get, but even we did not go this bad. We did not go to a point where they said that they had to lay off staff and half the stadium has to be shut down. So अपने ही, if we cannot, like right now, I think nobody can judge what is going to happen. Like देखो स्केपगोट बनाना है और उनका मतलब उनको पोस्टर छपवाना है वो दिखा के कि देखो एक रशियन को हमने बैन किया तो they could even fucking liquidate the club. But like we have no idea what is going to happen. Like literally 48 hours from now, we would be sitting here and there would be a completely different scenario. We would have no idea about it. Absolutely. Yeah, exactly. Chelsea is a great club. I would like to see them in UCL. They're one of the contenders right now. Okay. No doubt. No doubt. But it's good for Lille. That is what happens when you sleep with an oligarch.
Sleep with Americans. At least they take your money, not your identity. So guys, do you have any final questions for us? If you have, I'm gonna wait for 30 seconds for you guys to put up any questions you have, because बहुत breaking news हुए हैं while we are live. Like the David Ornstein news कि United का manager search is going a long way, and the Chelsea Football Club news. I think it's gonna be a strange week in terms of everything, and especially the football world. But then it's just not football world. Your day-to-day businesses, your stock markets, your everything is affected directly or indirectly by wars. Shubham says, but still Hala Madrid. GGMU, bro. Yeah. Because we don't care if we get UCL by the points reduction. Who cares? If Derby gets relegated, उसके ऊपर वाली टीमों की वो they will cry कि नहीं नहीं इनको तो 21 पॉइंट का डिडक्शन मिला था, हमें रिलीगेट कर दो. No, it doesn't work that way. शुभम says United to win against Tottenham. अरे भाई पता नहीं आजकल ना यूनाइटेड पर भरोसा करना एक मैच से पहले कि भाई जीतेगी. It's like, you know, भाई एक मैच पहले नहीं, फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में नहीं हो रहा है अभी तो. हाँ, फर्स्ट हाफ एक मैच तो बहुत लंबी बात है. फर्स्ट हाफ में भी 2-0 आगे हो ना तो भी ऐसा लगता है कि यार भाई ध्यान रखो यार, कोई भरोसा नहीं है अपने टीम का. सेकंड हाफ में नॉर्विच बन के आ जाएंगे बाहर. Alright guys, thank you so much for tuning in today. Really loved your company. फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, हमारे सोशल्स देखो डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी करो. 1000 तक पहुंचाओ ताकि हम अप्रोच कर पाए प्लेयर्स को कि भाई हम इधर आओ, यूनाइटेड का बहुत एक अच्छा चैनल है इंडिया का, तो मजा आ जाएगा. यूनाइटेड प्लेयर्स को भी आते हैं तो अभी लॉन्ग टर्म में है, बट देन द जर्नी स्टार्ट्स टुडे. ठीक है, बहुत लंबी जर्नी है. वी गोना डू इट. अभी सही में दे दूं? प्रेडिक्शन मांग रहा है मुझसे. मैं स्ट्रीक बोल. हाँ, प्रेडिक्शन बाकी है. सॉरी, आज का मेन एजेंडा तो प्रेडिक्शन ही था. लेट्स डू द प्रेडिक्शंस फटाफट. लेट्स स्टार्ट विद मुदित भाई. 2-2 ड्रॉ. लॉस. विघ्नेश. बाप रे. 3-1 विन. किसका? अपना 3-1 विन यूनाइटेड. 3-1 यूनाइटेड. ठीक है. 2-1 यूनाइटेड. 2-1 यूनाइटेड. रैशफोर्ड गोल मारेगा विनर. क्या बात है. यहाँ पर यूनाइटेड को हारता हुआ तो कोई प्रेडिक्ट नहीं करने वाला है. देखो वो तो मैं बोल देता हूँ. सो फॉर मी 2-0 यूनाइटेड. क्लीन शीट. या क्लीन शीट. इतना भरोसा मेरे को भी नहीं है ओल्ड ट्रैफोर्ड पे. ऐसे ही सेक्सी लग रहा है. मेरे को भी पता है गोल खाएंगे. और इतना भरोसा मेरे को नहीं है ओल्ड ट्रैफोर्ड पे अपने क्लीन शीट रखेंगे जितना मेरे को रैशफोर्ड गोल मारेगा उसके ऊपर है. तो सोच कितना मेरे को भरोसा है अपने डिफेंस पे कि वो एक गोल तो जाने ही देने वाली है. बट एक कैवियट डालना चाहता हूँ बीच में. मगवायर शुडंट स्टार्ट. आई डोंट वांट हिम टू स्टार्ट. कैप्टन, लीडर, लेजेंड. अरे अभी अंडर 18 में स्पीच दिया था ना, एंड वी वन 3-0. वो तो यार वो तो ऑनेस्टली like very good of him, like as an under 18 team going to a important match and the captain of United coming down, and not because he had to, but then he going himself is a very good thing that helps youngsters develop. So it's good to see from his end that he's doing that thing, and really happy that we have another amazing crop of under 18s coming up. Another final, hopefully we win this time, and a lot of those come into the first team in the next couple of years. Definitely. घरनासो क्या प्लेयर है, बाय द वे, जस्ट एफआईआई. अरे अमेजिंग प्लेयर. क्या गोल मारा था वापस. मुझे लगता है वो ब्रेक कर देगा नेक्स्ट सीजन. उसको देखता हूं ना तो honestly I see him and I think of Sanchez of Arsenal. Like he just looks like that player. Like he's built that way. He runs. I don't know what it is, but it just makes me feel that physicality भी अच्छा है उसका. Yeah, exactly. That stands out, I would say.
because dribbling तो कैसा है कि like I've seen a lot of under 18s do that amazing dribbling, but वो Garnacho का जो hold up play like while turning and twisting, like the way he holds up defenders, amazing. Like I've seen just a couple of videos. I might be completely off the mark, but like he looks like a player. He looks like someone who will take up the next level. बिल्कुल बिल्कुल. Okay guys, good night. आज लंबा podcast हो गया. Hope you had fun. Love you all and keep helping us so that we'll bring amazing content for you. Good night. Yeah. Good night.